Thank you so much, Vivek. Thank you for the kind invitation. And it's really nice to be a part of this Cancer Conclave 2024 and with CRSF, Uhapo and UTSA Foundation. And a very special thanks to Dr. Kumar Prabhash as well as Dr. Vijay Patil for getting this all together. And of course to you, Vivek. So I think the best thing about collaboration जो मैं अभी तक सुनती आ रही हूँ is the fact that we are here because of collaboration. We have clinicians, we have patient advocates, we have other support groups, all of them a part of this entire meeting. And that itself is a big start. So without much ado, I will start my presentation on navigating a cancer diagnosis. Because जब एक cancer diagnosis का जिसको कहते हैं शुरुआत होती है कि आप फैमिली से या आप पेशेंट से बात करते हैं तो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो दो चीजें जो प्रोमिनेंट होती हैं, व्हाई मी, मुझे ही ये क्यों हो रहा है और मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसा हो गया. सो रीजंस, पेशेंट्स ट्राई टू फाइंड रीजंस, केयर गिवर ट्राई टू फाइंड रीजन, एंड देन विल आई सर्वाइव, मतलब विल आई बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, क्या मैं जिंदा बचूंगा या बचूंगी. सो दीज आर द टू बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो केयर गिवर्स और पेशेंट्स दोनों के माइंड में होते हैं. एंड उस चीज को से बाहर निकलना and then to be able to concentrate on the treatment कि हमको आगे चल के क्या करना है, क्या steps हैं. And that is why my presentation I say taking the right step in time. And how do we mitigate any kind of issues, gaps, problems जो उस वजह से create होती हैं और कैसे और कौन सी ऐसी agencies हैं जो help कर सकती हैं उन चीजों को mitigate करने के लिए. Next slide please. So first and foremost, I will introduce you to some of the problems that are existing in the system. Now, Vandana ji talked about high-income countries, जो हमारी LMICs हैं या medium-income countries हैं, accessibility की, resource की, affordability की, ये सब main चीजें हैं for either approaching cancer care facilities or continuing treatment. Tata Memorial Center जो एक institution है, उन्होंने institutionalize करा है care को, wherein we have now 9 institutes across or centers across the country. We also have NCG, which has about 131 members, hospitals, which are giving standardized care and quality-based evidence care across the country. So ये सब चीजें हैं जो शुरुआत में हुई हैं. आपने मेडिकल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन किया था. मैं आपको बता दूं कि 1941 में जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना हुई उसमें मेडिकल सोशल डिपार्टमेंट था और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टाटा मेमोरियल से शुरू हुई हैं and they have been taken as SOPs or standard of practice or care throughout cancer care management in the country, and not only in India but also in other parts of the world. कुछ barriers to care जो मैं आप इंट्रोड्यूस पहले भी किया था कि क्या ऐसी चीजें हैं जो या तो पेशेंट को डिले करती हैं इन अप्रोचिंग अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, या जब कैंसर डायग्नोसिस होता है तो उस हिसाब से उसको थोड़ा झिझकना होता है या हेजिटेंसी होती है in trying to complete treatment or start treatment. एक तो lack of awareness है कि कैंसर है क्या, उसका हम early detection से क्या फायदे हो सकते हैं. Also that not all cancers are incurable. There is a right management of cancer also. Cancer is not a death sentence. ये सब कैंसर के बारे में जो है lack of awareness है. आपके अपने symptoms हैं जो कैंसर जिनसे अगर आप उनको पहले नहीं बताते हैं या उनको नहीं डायग्नोस कर पाते हैं तो वो आगे चल के प्रॉब्लम में आ जाते हैं. तो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, फियर एंजाइटी होता है. कई बारी हम पेशेंट्स को देखते हैं जो अपने ही फैमिली मेंबर्स से छुपाते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है. एंड ज्यादातर हमने देखा है वल्नरेबल पॉपुलेशन जो जैसे लेडीज होती हैं वो अपने सिम्टम्स के बारे में जल्दी नहीं बताती हैं. देन जब आप कैंसर ट्रीटिंग सेंटर में आते हैं, लॉजिस्टिक्स, अकोमोडेशन, फंडिंग, ये सब चीजें हैं जो आपको या तो जैसे ड्रॉप आउट होता है या आप अपनी ट्रीटमेंट आगे नहीं लेके जा सकते हैं. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, फैमिली में लोग नहीं हैं जो आपकी कैंसर ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं. बिकॉज वी डू नीड पीपल अराउंड. जैसे एक कम्युनिटी होती है तो हमारा फैमिली मेंबर्स का कितना सपोर्ट है. अगर फर्ज करिए एक ही फैमिली मेंबर है या अर्निंग फैमिली मेंबर है तो उसका क्या सपोर्ट है. देयर इज अ लेडी इन द हाउस, उसको है तो कौन उसके साथ रह सकता है. सो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड परसेप्शन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग.
बिकॉज हमने जो ये नेविगेशन प्रोग्राम है ये हमने इंडोनेशिया में भी करा था, and we trained 21 doctors, nurses, and psychologists in it. And they had to say that culturally, though Indonesia is very close to India, but आप ये मान के चलिए कि वहां पर भी कुछ अपनी cultural beliefs हैं. Like according to them, patients in India are more proactive towards their cancer treatment rather than the ones in Indonesia, because उनकी कुछ religious system beliefs हैं जो उनको ये जिनकी वजह से वो ये सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मुझे ये हो गया है. तो ये तो मेरे को जिसको कहते हैं कि this is something that is given to me as a part of my karma, or howsoever they construct that. So the health seeking behavior becomes poor. Their low health literacy कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ये इस कैंसर से निकल सकते हैं, या हाउ डू वी मैनेज दैट, वो सब चीजें आर बैरियर्स टू केयर. और ये सब जो है poor preventive measures lead in delayed cancer presentation at a tertiary care center, then attrition and dropout at an early age, and gaps in the cancer care continuum. Because cancer, जैसे आप जानते हैं, it is not a linear process. उसमें आपके बहुत सारे, it's a multimodal kind of treatment. आपका surgery भी है, chemotherapy भी है, radiation therapy भी है, then sometimes you can have recurrences, metastasis. So there are transitions of care. एक सीधा line नहीं है, उसमें ups and downs हैं. तो when you are going from one transition to the other, how is the care managed for you? How integrated you are in seeking care and completing that line of treatment is also a continuum that you have to maintain. Then those who have been treated, उनका follow-up जो है वो किस तरीके से चल रहा है. There are a lot of individuals that we have found in hospitals who are not very proactive about their follow-ups. Some of them, we saw it in one of the centers, that if there is an adjuvant therapy, they feel one main therapy has been done, so there is no reason for adjuvant. These things require counseling, they require speaking, they require identifying individuals who might have these barriers and reducing the poor health outcomes. Next slide, please. जो मैंने डिले की बात करी कि कितना डिले होता है, ये 2013 में एक स्टडी हुई थी इन हॉस्पिटल इन उड़ीसा, एंड 3 महीने तक उनके जितने आईपीडी पेशेंट्स हैं उनका एक सर्वे लिया गया टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द अर्ली ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हाउ मच टाइम हैज इट टेकन फॉर देम टू अप्रोच टर्शरी केयर फैसिलिटी एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट. सो आप जब हमने उसको स्ट्रैटिफाई करा तो appearance of signs and symptoms, first consultation with family and friend, consultation with doctor, consultation with other health systems, because they also try to seek alternate systems like Ayurveda, homeopathy, some natural healing. Even some of them go to faith healers, and then finally referred by their own GP to an oncologist, and the treatment and diagnosis happens and treatment begins. So out of this cohort of patients, that the IPD ones that we were surveyed, it takes approximately 1 year, 8 months to start a treatment from early onset of symptoms. This had been done in 2013. I'm sure things are much better now with more cancer treating facilities and more cancer awareness that has come into the system. But it is very, very shocking कि इस हिसाब से हमारा जो even our own behavior towards seeking cancer treatment has this kind of a delay. Next slide, please. So before we started this Kewat program, अब कैंसर डिफिकल्ट है, कैंसर ओवरवेलमिंग है, कैंसर की ट्रीटमेंट लंबी है, ज्यादा टाइम लगता है, ये सबको पता है. बट जो फेजेस हैं और ट्रांजिशंस हैं ट्रीटमेंट के, उसमें क्या इसेंशियल नीड्स हैं, और इस वजह से हमने एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे किया था इन 5 TMC सेंटर्स in Maharashtra, Mumbai, Kharghar, as well as in Parel, Uttar Pradesh, Varanasi, Punjab, Sangrur, and Assam, Guwahati. So इसमें तकरीबन हमने 1674 पेशेंट्स को हमने सर्वे किया, और उसमें से हमने 4 फेज में इनको डिवाइड करा. 1, पेशेंट्स हु आर न्यूली रजिस्टर्ड, 15 days पोस्ट रजिस्ट्रेशन, मिड ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप. और इस सर्वे से हमें ये ज्ञात हुआ कि जितने भी पेशेंट्स की नीड्स हैं उनको हम स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं इनटू इंफॉर्मेशन नीड्स, लॉजिस्टिक्स, अकोमोडेशन, फाइनेंसेस, ट्रैवल. कईयों को लैंग्वेज बैरियर होता है, लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है, ओवरक्राउडिंग एट हॉस्पिटल्स,
ट्रीटमेंट डिलेज के ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है शुरू होने में, प्रोग्नोसिस एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एक बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उसके साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स, एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. सो ये सारी जो चीजें हैं ये एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स डिफरेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं. एक और चीज हमने इस सर्वे से जो हमें वन फाइंडिंग विच वाज देयर कि अर्ली पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस as the patient goes on in the continuum. So जब आप पहले newly registered patients होते हैं, और इस the reason for showing you this survey is क्योंकि ये जो टॉपिक है आपने मुझे दिया है कि इनिशियल डायग्नोसिस. सो जो न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, और प्रॉब्लम्स होती हैं फर्स्ट गेटिंग अकस्टम्ड और गेटिंग इमर्सिंग देमसेल्व्स और अब्सॉर्बिंग द फैक्ट कि उनको कैंसर है. दूसरा, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होना, ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगना, फिर उसके बाद कौन से इन्वेस्टिगेशंस होने हैं, उसके लिए क्या जरूरतें हैं, हॉस्पिटल सिस्टम्स क्या हैं, क्लिनिकल केयर मैनेजमेंट कैसे करना है. तो ये सब जो चीजें हैं ये न्यूली डायग्नोज कैंसर पेशेंट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है बिकॉज उन्होंने ये सिस्टम कभी देखा नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी टारगेट as an initiative for Kewat newly registered patients, and we have tried that all, like across all centers where we have our presence, we maintain the ratio of at least interacting with 90 to 80% of newly registered patients. So ये ratio हमने across TMC hospitals maintain करा है. Next slide please. ये एक हमने ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट किया था ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट एट आवर एट्रिक सेंटर. 100 न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, 1 मार्च को जो न्यूली रजिस्टर्ड थे उनका हमने ओवर 4 days उनका इन्वेस्टिगेशंस के क्या है, कंसल्टेशन हो गया है, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन एडवाइज्ड, व्हाट इज द फॉलो अप, वी ऑब्जर्व्ड और असेस्ड इट थ्रू द EMR रिपोर्ट्स. उसके बाद जिनका जो टाइमलाइन में नहीं थे या कुछ रिपोर्ट्स उनकी पेंडिंग थी या अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए थे, उनको हमने फॉलो अप किया. And we had 44 patients. We realized out of 100 newly registered patients, they had problems in incomplete workup, billing, workup not done, missed consultation, and financial help. 39% did not require any assistance. 5 patients treatment outside ले रहे थे. 2 were referred for treatment, and there was 10 no communication established and dropout. But इससे मोटा-मोटा ये देख सकते हैं कि at least more than 40% of the patients required assistance and had not approached the healthcare facility कि मुझे assistance की जरूरत है. We had to approach those patients. So proactive advocacy is very important. Waiting for the patient to come to you might lead in a complete meltdown of lot of verticals. So instead, we should try to concentrate and integrate what we have. Next slide, please. You'll have to go down. Please, can you press again? So these are the various stages that we have been able to identify of running the patient navigation program since 2018 in Tata Hospital and other centers. So in screening and early detection, the kind of barriers and concerns that play are religious and cultural beliefs, financial concerns, lack of awareness, and fear of diagnosis. When diagnosis is done and the patient realizes that there is a cancer diagnosis, then there is delayed referral. तो उसपे जब आपका कैंसर डायग्नोसिस इवन एट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी है तो उसका एक रेफरल जो है वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए. Psychosocial concerns, then financial concerns, logistics again play a very important part in diagnostics, and also in the communication barriers. We have patients in Tata Hospital that come from different parts of the country. First, understanding what is medical terminology of their cancer prognosis and diagnosis. Secondly, you might have a patient who's coming from Assam who only knows Assamese. So either there has to be a translator. What we have also tried to do is involve, whenever we are selecting navigators, we try and involve individuals who have at least one more Indian language. So it is Hindi, English, and one more language. So it could be Marathi, Bengali, etc. So that we can, then address a diverse population. Next slide, please.
Now, what are the solutions? The solutions are like we have a multidisciplinary team for treatment of cancer and management of cancer, there should be a multidisciplinary approach towards support. And this support involves everyone. It involves advocates, it involves MSW, it involves support staff, it involves home care individuals, it involves Kewat. But a communication honi chahiye between each of these verticals so that everyone knows where the patient is. Because here, what happens when the patient is registered under one vertical, there is no communication from one to the other. We cannot work alone. That is a given. We have to work together. And also, that multidisciplinary approach should be offered to the patient right at the onset of as soon as the treatment starts, so that he knows there should be a resource directory available for patients to be able to access and approach whenever necessary. And you should have individuals who can then interface with the patient at different standpoints, especially during transition of care. And as Vandana ji said, that there is nothing that can prevent you from being a cancer advocate. Yesterday, I had a call from a I think 12th class student who said that, ma'am, what we are planning to do is create 3 fundraisers, and the benefits we want to give a part 50% to treatment and 50% to those institutes who are doing cancer research. I mean, I was so happy that these are the kind of people who are coming across and coming forth with getting the patient advocacy together. And I really wish, and the next slide, please. And we only can learn from each other. And collaborations is definitely the way ahead, which has been spoken very many times on this platform. Last slide. Thank you very much for listening in. And I really wish that the testament to cancer control and cancer management is when there will be a cancer day that we'll be celebrating no cancer. Thank you.